Hello students, subscribe the Fundamental Pharmacy and press the bell icon for more videos. Hello students, join our online course for GPAT Niper Drug Inspector to get assured amazing rank. Hello my dear students, welcome back to the Fundamental Pharmacy. Today we are going to see classification number 24, that is a serotonin, 5-hydroxytryptamine and related drugs. Serotonin, 5-hydroxytryptamine and related drugs, and we are also going to see drugs used in the migraine. So this classification is very important for your GPAT Niper Drug Inspector Government Pharmacist exam. So I would like to request you, please watch this video until end. My dear students, we have already seen 23 classification videos. If anybody has not seen previous videos of classification, please go in the channel's playlist and watch all the previous classification videos, because these videos are very important for your GPAT Niper DI Pharmacist exam preparation. And believe me, a lot of MCQs they are going to be covered by just watching these videos. My dear students, you should know what do you mean by serotonin. As in the previous few videos we have seen about the autocoids. पिछले कुछ सेशंस में हमने देखा है कि ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं. सो सेरोटोनिन और इट इज आल्सो नोन एज अ 5-hydroxytryptamine. सेरोटोनिन और 5-hydroxytryptamine, अगेन इट इज वन ऑफ द autocoid, self releasing hormone or self releasing chemical or neurohormone. 5-hydroxytryptamine or serotonin is synthesized from one amino acid. Likewise your other catecholamines, other autocoids, जैसे बाकी के ऑटोकॉइड्स होते हैं, जैसे उसका सिंथेसिस होता है, उसका स्टोरेज होता है और रिलीज होता है. कैटेकोलामाइंस जो होते हैं उनका भी सिंथेसिस होता है, स्टोरेज होता है और बाद में रिलीज होकर मेटाबॉलिज्म होता है. सो लाइकवाइज दैट योर सेरोटोनिन और 5-hydroxytryptamine is also synthesized from one amino acid known as the essential amino acid. And what is that? Tryptophan. So tryptophan will be hydroxylated first by the enzyme hydroxylase to form a 5-hydroxytryptophan, right? Hydroxylase means it will impart hydroxyl group on a tryptophan at the position number 5. So 5-hydroxytryptophan, and after that subsequent decarboxylation of 5-hydroxytryptophan will give you 5-hydroxytryptamine. So your serotonin is synthesized from tryptophan, sequential hydroxylation and decarboxylation. पहले हाइड्रोक्सिल को ऐड किया जाता है, बाद में रिमूव किया जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप. So you will get a 5-hydroxytryptamine. Now it will be stored in the synaptic vesicle. It will be released upon the signal. It will be metabolized. It will be reuptaken. So who used to metabolize this serotonin? So there are two enzymes. First one is known as a MAO. MAO means monoamino oxidase enzyme. So it will metabolize the 5-hydroxytryptamine into 5-hydroxyindole acetic acid. So remember, आपको क्वेश्चन आ सकता है, what is the principal metabolite of 5-hydroxytryptamine or serotonin? So 5-hydroxyindole acetic acid or 5-HIAA, that is the principal metabolite of your serotonin, right? So again this 5-hydroxytryptamine is also metabolized by one enzyme known as a 5-HT dehydrogenase to form a 5-hydroxytryptanol. 5-hydroxytryptanol. Now this 5-hydroxytryptamine, as I have told you, it is a autocoid. It has a physiological function. It has a similar action, little bit similar action like your histamine. So as histamine will produce a triphasic response on the blood pressure, likewise that your serotonin also produces triphasic response on the blood pressure. So initially ये serotonin जो है, initially ये जो 5-hydroxytryptamine है, ये blood pressure को decrease करेगा, बाद में थोड़ा इंक्रीज करेगा ड्यू टू वैसोकंस्ट्रिक्शन और बाद में फाइनली फॉल इन ब्लड प्रेशर. सो इट इज अ ट्राइफेजिक रिस्पांस. ट्राई मतलब 3, फेज मतलब टाइप, ठीक है. तो पहले इनिशियली ब्लड प्रेशर कम करेगा, बाद में बढ़ाएगा और बाद में फिर से कम करेगा. सो ट्राइफेजिक रिस्पांस ऑन ब्लड प्रेशर. 5-hydroxytryptamine और सेरोटोनिन मोस्टली इट इज लोकेटेड इन द ब्रेन एंड GIT. In the GIT it causes the constriction of smooth muscles of your GIT. It causes peristalsis. It causes increase in the peristalsis, right? So there are other actions also. So all these actions they are mediated by interaction of this 5-hydroxytryptamine with their receptor. Now what are the different kind of receptors of 5-hydroxytryptamine?
इनके रिसेप्टर कितने होते हैं? देयर आर 7 to 8 5-hydroxytryptamine or serotonin receptors. So out of that, few are listed over here. So 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4. So these are the receptors. So normally इनके रिसेप्टर बहुत ज़्यादा होते हैं 5-HT1 to 5-HT8. मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4, 5-HT6, 5-HT7, 5-HT8. There are 8 receptor which has been identified, which has been recognized, characterized for the serotonin, but these 4 are mostly dominant. So out of that 5-HT1, all these 5-HT receptors, they are receptors belonging to G protein coupled receptors. ये जो serotonin के receptors होते हैं वो सभी receptor क्या है? GPACR है, G protein coupled receptor. But exception is there, one exception is there, that 5-HT3. ठीक है, 5-HT3 जो receptor होता है, that is a ion channel in nature, so it is a ionotropic receptor. Others are the G protein coupled receptor. G protein coupled receptors, they are also known as a metabotropic receptor. They are also known as a 7 transmembrane heptahelical receptors. Okay, you have to remember this. Okay, now these are the receptor 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4. So out of that, 5-HT1 has a 2 subtype, 5-HT1A, 5-HT1B, 1D. We'll see this receptor one by one. So first is nothing but the 5-HT1 receptor. So in that 5-HT1A subtype. So 5-HT1A is located in the presynaptic neurons and it is a kind of autoreceptor. 5-HT1 जो होता है presynaptic neuron में होता है, ये autoreceptor होता है, इसका function होता है to control the release of 5-hydroxytryptamine or serotonin. So to control the release of 5-HT. So that is the function of 5-HT1, which is a presynaptic neuron. Partial agonist of this 5-HT1 drugs like buspirone, isapirone, gepirone. These drugs are useful as an anti-anxiety agent or anxiolytic agents. So जो buspirone होता है, isapirone होता है, gepirone होता है, ये क्या है? सब anxiolytic drug है, anxiolytic drug. And all these are the 5-HT1A partial agonist. तो यहाँ पे टर्म आ गया देखो, partial agonist. तो भेंडी partial agonist होता क्या है? There are different terms like full agonist, antagonist, partial agonist and inverse agonist. तो ये सारे terms मैंने already समझा दिया है already. So full agonist will combine with the receptor to produce a full action. Okay, antagonist will block the receptor. Okay, then partial agonist is nothing but it will just sensitize the receptor. It will produce a pharmacological effect which is very less as compared to full agonist. Now inverse agonist means it will also interact with the receptor but will produce opposite action to that of the full agonist. तो ये मैंने यहाँ पे भी रिवाइज कर दिया आपको. Okay, then second type of receptor of 5-HT1 is nothing but a subtype is nothing but the 5-HT1B, 1D. So this receptor is involved in the constriction of cranial blood vessels. आपका जो खोपड़ी में blood vessels है उसको ये constrict कर देगा, and that's why agonist of this receptor like sumatriptan, niratriptan, other drugs. So all the triptans, they are agonist of 5-HT1B, 1D receptor. तो ये आपको याद रखना है. And all these are used as a treatment for migraine. So they are useful in the acute migraine. Now 5-HT2 receptor, 5-HT type 2 receptor. So 2A, 2C, 5-HT 2A, 2C. So it is responsible for the most of the direct action of serotonin. These action are responsible for the decrease in the blood pressure, right? Ketaserine and retaserine. Ketanserine and retanserine, these are the two drugs which are antagonists to this 5-HT2A, 2C receptor, which are used in the treatment of blood pressure. They are useful as an antihypertensive agent. Now again, clozapine, risperidone. ये जो दोनों ड्रग है, clozapine and risperidone, ये क्या है? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं और सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं. They also act as an antagonist to this 5-HT2A, 2C receptor. Now third type of receptor is nothing but the 5-HT3 receptor. So I have told you कि जो सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स होते हैं, 5-hydroxytryptamine के जितने भी रिसेप्टर्स है, 5-HT1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So out of that, all are G protein coupled receptor, but 5-HT3 is a ion channel. ये आइनोट्रोपिक होता है, बाकी के जो है वो मेटाबोट्रोपिक होते हैं. ठीक है, अभी देखो 5-HT3 रिसेप्टर, so it is ion channel. ओके, ये जो है 5-HT1 and 5-HT2, ये जो रिसेप्टर्स है ये मोस्टली का ये 5-HT1 जो होता है
तो उसके जो सब टाइप्स है 5HT1A 5HT1B 1D, तो ये न्यूरॉन में होते हैं। 5HT3 कहाँ पे होता है, ये होता है आपके GIT में। 5HT4 भी आपके GIT में होता है। नाउ 5HT3 receptor is ionotropic and mediate all the most of the reflex produced by 5HT and indirect action of serotonin. So mostly जो vomiting वगैरह जो होता है that is mediated by this 5HT3, and that's why 5HT3 antagonists they are useful in the treatment of vomiting. ठीक है, so mediate the most of the reflex and indirect action of your serotonin. So antagonist drug like ondansetron, granisetron, tropisetron, and all the setrons, they are a drug of choice for the vomiting induced by anti-cancer drugs, right? So vomiting induced by chemotherapeutic agents, chemotherapy. Now last receptor is a 5HT4 receptor. This receptor is present in the GIT and responsible for the increase in the peristalsis. 5HT4 receptor is present in the GIT and responsible for the increased peristalsis. ये आपके peristalsis को बढ़ा देगा, right? And that's why agonist of these drugs like cisapride, then mosapride, then renzapride, then tegaserol, they are useful in the treatment of GERD, gastroesophageal reflux disease. इनके जो एगोनिस्ट है 5HT4 एगोनिस्ट दे आर यूजफुल इन द GERD. 5HT3 के एगोनिस्ट जो है दे आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग. 5HT2 2A 2C के जो एंटागोनिस्ट है दे आर यूज्ड इन द treatment of hypertension and also used in treatment of they are antipsychotic agent. Partial agonist to 5HT1A useful in the anti-anxiety drugs, useful as an anti-anxiety drug. Then 5HT1B 1D agonists, they are useful in the treatment of migraine. Now we'll see the next part. So 5-adrexytryptamine 5HT antagonist. तो ये क्या है, 5-adrexytryptamine blockers और serotonin blockers है. देखो इसमें क्या है कि देयर आर 3 कैटेगरीज. तो पहला होता है नॉन सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट, जो नॉन सिलेक्टिव है या फिर पार्शियल एगोनिस्ट और एंटागोनिस्टिक एक्शन है उनका ऑन सेरोटोनिन रिसेप्टर्स. सो नॉन सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट एंड पार्शियल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट. सो इन दैट यू आर अर्गोटामाइन. अर्गोटामाइन क्या है, इट इज अ अल्कोलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम अर्गोट. सो अर्गोट क्या है, क्लेविसेप्ट पर्पुरिया. इट इज नथिंग बट द फंगस क्लेविसेप्ट पर्पुरिया developed on the ray plant known as Sickle cerulli family Gramineae. Okay, so it will have indole kind of alkaloids. All alkaloids are present in the form of lysergic acid, right? तो ये पूरा additional information. So ergotamine is there, lysergic acid diethylamide LSD. So LSD जो है lysergic acid diethylamide. तो ये क्या है, it is a hallucinogen होता है. 2-bromo lysergic acid diethylamine, then methyl sargide, then ciproheptidine and sinarzine. तो यहाँ पे देखो ciproheptidine जो है इट इज आल्सो हिस्टामाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. ये एंटी हिस्टामिनिक भी है. सो ciproheptidine इज आल्सो एंटी हिस्टामिनिक एंड इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया. मतलब ये क्या है कि ये एपेटाइजर है, ये आपका भूख बढ़ा देगा. सो इट इज अ एपेटाइट स्टिमुलेंट एंड देयरफॉर इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द वेट गेन इन द चिल्ड्रंस. तो बच्चों में वेट गेन करने के लिए इसका यूज किया जाता है. सो इट इज अ एपेटाइजर एंड यूज्ड इन द treatment of anorexia. Right now sinarzine again it is a histamine receptor antagonist also. So ये दो जो है ciproheptidine and sinarzine ये histamine receptor को भी ब्लॉक करेंगे और 5-adrexytryptamine receptor को भी ब्लॉक करेंगे, राइट. और lysergic acid diethylamide it is nothing but the hallucinogen. ये it is a hallucinogen compound. Ergotamine is a natural indole alkaloid obtained from the ergot, right. Now these are the non-selective. They non-selectively antagonize 5HT receptor. They will antagonize all 5HT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी इसमें भी. Second class is the 5HT2 antagonist. ये जो है ना 5HT2 antagonist ये little bit selective होते हैं एक्शन में. That's why 5HT2 receptor antagonist. So in that you have ketanserin, ritanserin, clozapine and risperidone. अभी ये ketanserin, ritanserin जो है they are used in the treatment of hypertension, right. और ये जो clozapine, risperidone है they are known as atypical antipsychotic drugs. Or they are also known as second generation antipsychotic drugs. तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि क्लोजापिन जो है क्लोजापिन इट इज अ सेकंड जनरेशन antipsychotic drugs. Risperidone is also there. Now class 3 third category they are known as 5HT3 antagonist. 5HT3 antagonist. So all these drugs they are used in the treatment of vomiting.
ये जो है इमेसिस में यूज करते हैं, एंटी इमेटिक ड्रग्स होते हैं 5HT3 एंटागोनिस्ट. So they will antagonize 5HT3 receptor only. ये सिलेक्टिवली 5HT3 एंटागोनिस्ट ये सिलेक्टिवली 2 को ब्लॉक करेंगे, ये नॉन सिलेक्टिव ये सबको ब्लॉक करेंगे. ठीक है, तो ये वाले सिलेक्टिवली दो नंबर का जो रिसेप्टर है 5HT2 उसको ब्लॉक करेंगे, ये 5HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे. अब इसमें क्या है, ऑल द सेट्रॉन्स. ओके, देखो ऑनडेन सेट्रॉन, ग्रैनी सेट्रॉन, ट्रोपी सेट्रॉन, पैलोसेट्रॉन एंड रैमोसेट्रॉन. यहाँ पे सब सेट्रॉन्स है, जैसे ऑनडा, ग्रैनी, ट्रोपी, पालो and Ramu. Onda, Granny, Tropy, Palo and Ramu. So all these are the cetrons, cetron derivative, or they are known as a 5HT3 antagonist. They are useful in the treatment of vomiting, right? तो उसमें देखो यहाँ पे जो है अंडेन सेट्रॉन जो है, ये पैलोसेट्रॉन जो है दैट इज अ लॉन्गर एक्टिंग ड्रग. ये जो पैलोसेट्रॉन जो होता है दैट इज अ लॉन्गर एक्टिंग ड्रग एंड अंडेन सेट्रॉन जो है वो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है. So ondansetron is a drug of choice in the vomiting induced by anti-cancer drug. यहाँ पे याद रखो. Okay, all. Now we'll see the next. You can see simple जो ऊपर देखा है वही है. Examples of 5HT receptor blockers: methyl sergide, ketanserin, ciproheptidine, ondansetron and clozapine. Now we'll see the next part. Different type of receptor, their agonist drug and antagonist drug, their uses and little bit comments. So in short I will revise you this chapter. Receptor uses and comments. So पहला receptor देखो आपका 5HT1D. So 5HT1D उसमें भी सब टाइप होता है 5HT1A B C D, तो उसमें भी सब टाइप्स है. 5HT1D तो उसका एगोनिस्ट कौन होता है? एगोनिस्ट ऑफ 5HT1D इज सुमाट्रिप्टान. क्या है? सुमाट्रिप्टान. Sumatriptan is agonist of 5HT1D and it is used in the treatment of acute migraine or also used in the treatment of cluster headache. ये acute migraine में यूज करते हैं, cluster headache में उसका यूज है. Now it is a short acting, जो मैंने पहले ही बोला है, it is a short acting and needs repetition of doses. अभी short acting है तो डोज तो बार बार देना पड़ता है ना बॉस. ठीक है, short acting है, right? Now second agonist buspirone. Buspirone is agonist to the 5HT1A receptor. It is a agonist antagonist type, means it is a partial agonist. क्या है? Partial agonist है. It is a buspirone is a partial agonist to 5HT1A. So it is useful as an anxiolytic agent, right? Now dexpenfluramine. Dexpenfluramine क्या है? It is a 5HT receptor agonist. ये non selective agonist है. Then dexpenfluramine. एंड इट इज एपेटाइट सप्रेसेंट. ये क्या करेगा? आपका एपेटाइट जो है सप्रेसेंट करेगा, तो ये एनोरेक्सिया प्रोड्यूस करेगा. एनोरेक्सिया मतलब आपको भूख ही नहीं लगेगा, सो आपका वेट लॉस हो जाएगा एंड दैट इज नोन एज एनोरेक्सिया एंड दैट इज एपेटाइट सप्रेशन. सो देन डेक्सपेनफ्लोरामाइन इज यूज्ड फॉर द एपेटाइट सप्रेशन. पेशेंट शुड बी केयरफुली मॉनिटर्ड फॉर द रिस्क ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्योंकि जितने भी एंटागोनिस्ट है एगोनिस्ट है आपके जितने भी एगोनिस्ट है सेरोटोनिन के रिसेप्टर के, ऑल दे कैन प्रोड्यूस pulmonary hypertension. So particularly dexpenfluramine patient should be monitored. Now antagonist of this serotonin receptor पहला है आपका ciproheptidine और cyproheptidine. Cyproheptidine is nothing but the antagonist to the 5-hydroxytryptamine 2 receptor as well as histamine 1 receptor. मतलब ये antihistaminic भी है और anti 5HT receptor block and anti 5HT भी है. Histamine receptor blocker as well as serotonin receptor blocker, okay, and also muscarinic blocker. तो ये ciproheptidine जो है histamine को ब्लॉक करता है, serotonin को ब्लॉक करता है, muscarinic receptor को भी ब्लॉक करता है. Now it is used as a appetite stimulant, appetizer. ये भूख बढ़ाएगा आपकी. dexpenfluramine भूख कम करेगा, ये ciproheptidine आपका भूख बढ़ाएगा. ठीक है, तो it is also used in the treatment of carcinoid tumor. Carcinoid tumor में भी इसको यूज करेंगे, right? Now next drug है ketanserin. So ketanserin क्या है? It is a antagonist to the 5HT1 and 5HT2 used in the treatment of hypertension and also antagonizes the action of and also antagonizes the platelet aggregation action promoted by 5-hydroxytryptamine. तो 5HT जो है वो प्लेटलेट का एग्रीगेशन भी करता है, तो उसका जो एक्शन है वो ब्लॉक करने का काम कौन करेगा? Ketanserin, right? Now next is ondansetron. Ondansetron is a 5HT3 receptor antagonist used as an antiemetic, right? Now ergotamine और ergot alkaloids जो है, देखो क्या है?
Ergotalbulides, all ergotamine, ergometrin, they are the partial 5HT1 receptor agonist, partial agonist, और उनको antagonist भी बोलते हैं. They are used in the ergotamine is used in the acute attack of migraine, and this ergometrin is used to control the postpartum hemorrhage. Postpartum hemorrhage मतलब क्या? अगर प्रेग्नेंट वुमन में बच्चा डिलीवर किया उसके बाद में जो ब्लीडिंग होता है उसको बोलते हैं postpartum hemorrhage. So to control the bleeding after delivery of baby, that is a postpartum hemorrhage, ergometrin. Now methyl saccharide is a 5HT2 receptor partial agonist or antagonist, and it is used in the prophylaxis of migraine. ये migraine न होने के लिए, migraine का prevention करने के लिए. So it is not preferred due to risk of retroperitoneal and ये इसका adverse effect है retroperitoneal and mediastinal fibrosis. Drugs used in the treatment of migraine. First of all, you should know what is meant by migraine. तो पहले migraine क्या होता है? Migraine is a condition where there is a intense throbbing headache. आपको बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो जाएगा. It may be unilateral or bilateral. Unilateral मतलब एक साइड में, एक ही साइड पे दर्द होगा आपको. That is unilateral. Or it may be bilateral. But most of the time, migraine headache is a unilateral, and that is because of the dilation of cerebral blood vessel. तो आपके जो खोपड़ी में ब्लड वेसल्स है उसका अगर डायलेशन हो गया तो आपको ये हेडेक हो जाएगा, थ्रोबिंग हेडेक. ओके, इट इज अ पल्सटाइल थ्रोबिंग हेडेक एपिसोड्स, दैट इज नोन एज अ माइग्रेन ड्यू टू डायलेशन ऑफ cerebral blood vessel, right? Now to treat or to control this migraine there are different kind of drugs. तो पहले तो देखेंगे अपन one by one. Now drugs which are used to prevent the attack of migraine. प्रिवेंशन मतलब क्या? यहाँ पे भेंडी है prophylaxis. So these are the drugs which are used to prevent the attack. So they are used in the prophylaxis. They are, so पहला है propranolol, that is a beta blocker. It is a beta blocker, and other beta blockers also they are used for the prophylaxis of migraine. So question आ चुका है, propranolol is the most commonly drug which is used for the prophylaxis of migraine. Then antidepressants like amitriptyline, nortriptyline, and other antidepressants, tricyclic antidepressants. So they are also used as a prophylaxis of migraine. Flunarizine is a calcium channel blocker plus sodium channel blocker. ये flunarizine जो है calcium channel blocker होता है, sodium channel blocker होता है, ठीक है. Now valproic acid, gabapentin, topiramate, all these three drugs are nothing but the drugs used in the epilepsy. So ये anti-epileptic drugs है, valproic acid, gabapentin, topiramate, and they are also used for the prevention of your migraine attack. Recently, this topiramate is approved for the acute attack of this migraine, right? Now then ciproheptadine के बारे में we have seen. So it is a antihistamine and anti-serotonin drug which is appetizer, also used to prevent the attack of migraine, right? Now these drugs are used for the prophylaxis or prevention of attack, right, of migraine. Now these drugs are used to treat the migraine. ये जो drugs है ये, now these drugs they are used for the treatment. So they are used for the treatment. ये जो वाले है they are used for the prevention. They are used for the prophylaxis, right? For the prophylaxis. Now these drugs they are used for the treatment. Now we will see one by one. So to treat the attack, which drugs are there? So first one is nothing but the analgesic. देखो यहाँ पे लिखा है simple analgesic. तो simple मतलब क्या होता है? Simple मतलब क्या? I don't know. But दिया है तो दिया है. So obviously first class will be analgesic. Analgesic in that you have paracetamol, aspirin, metamizole and codeine. अभी ये codeine के simple analgesic में थोड़ी आता है. किस बेसिस पे क्लास किया है? I don't know. Codeine is nothing but it is a narcotic or it is a opioidal analgesic. Opioid analgesic होता है कोडिन, ठीक है. बेडी आप पे याद रखो. एंड एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ कोडिन इज नथिंग बट द मॉर्फिन. अगर आपने 10 मिलीग्राम कोडिन ले लिया तो उसमें का 1 मिलीग्राम मॉर्फिन बनेगा आपके बॉडी में, ठीक है. सो मॉर्फिन इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ कोडिन, एंड इफ यू टेक a 10 milligram of codeine, so out of that 10 milligram your body will convert 10 milligram codeine into 1 milligram morphine. So you can say morphine is the active metabolite of codeine. कोडिन का एक मेटाबोलाइट होता है मॉर्फिन, ठीक है. नहीं तो फिर बोलेंगे आप मैंने तो मॉर्फिन लिया नहीं, बॉडी में तो आप ऑलरेडी बन गए. सो एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कोडिन का मॉर्फिन. दिस पैरासिटामोल, एस्पिरिन एंड मेटामिजोल दे आर यूज्ड एज एनाल्जेसिक.
in the acute attack of migraine, right? Now second class in that you have NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. In that you have ibuprofen, naproxen, diclofenac, then mefenamic acid. ठीक है, ibuprofen के दो आइसोमर होते हैं, याद रखो अपना, इट इज अ प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव. नेप्रोक्सेन भी क्या है, प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव. डाइक्लोफेनाक क्या है, इट इज अ अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव. इसको एडवर्स इफेक्ट कौन सा होता है, इट विल कॉज गैस्ट्रिक इरिटेशन, इट विल कॉज हाइपर एसिडिटी, राइट. नाउ मेफेनिमिक एसिड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसमेनोरिया इन द ह्यूमंस, ये याद रखना है. इट इज एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स. नाउ थर्ड क्लास इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन, एंटी इमेटिक्स. इसमें आएगा आपका मेटक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, प्रोक्लोरपराजिन एंड प्रोमिथाजिन. मेटक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, प्रोक्लोरपराजिन एंड प्रोमिथाजिन, ऑल these are the anti-emetic drugs used in the treatment of acute attack. अब ये प्रोमिथाजिन क्या है, इट इज अ एंटीहिस्टामिनिक है. प्रोमिथाजिन क्या है, एंटीहिस्टामिनिक, ठीक है. प्रोक्लोरपराजिन भी वैसा है. Domperidone, metoclopramide is nothing but the 5-HT3 receptor antagonist, right? Now ergot alkaloids, next is ergot alkaloids. So in that you have ergotamine and dihydroergotamine. अभी ये बोलेंगे सर ये ergotamine है, dihydroergotamine है, ये डिफरेंस क्या है इसमें, ठीक है. So ergotamine is a natural alkaloid obtained from ergot and dihydroergotamine is a dehydrogenated derivative of ergotamine. तो डिफरेंस क्या है, so ergotamine is a non-selective in nature. So ergotamine will block your 5-HT receptors non-selectively, as well as it will block your alpha adrenergic receptors, also block the cholinergic receptor. Okay, so that's why. So alpha receptor blocking at dihydroergotamine. Dihydroergotamine is a dehydrogenated derivative of ergotamine and it will has an antagonistic property to the alpha receptor. ये अर्गोटामाइन क्या है, ये जो है अर्गोटामाइन, सो इसको अल्फा एगोनिस्टिक एक्टिविटी होता है. इसके कारण क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है. सो डीहाइड्रो अर्गोटामाइन जो है उसको एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी होता है. सो दैट्स व्हाई 5-HT1B1D रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, 5-HT1B1D रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. इसमें सब ट्रिप्टन आएंगे, सुमाट्रिप्टान, रिजाट्रिप्टान, नेराट्रिप्टान, जोल्मीट्रिप्टान एंड फ्रोवाट्रिप्टान. देखो सुमाट्रिप्टान इट इज अ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, रिजाट्रिप्टान, नाराट्रिप्टान, जोल्मीट्रिप्टान एंड फ्रोवीट्रिप्टान. सो फ्रोवीट्रिप्टान इज अ लॉन्गर एक्टिंग ड्रग. ओके, रिजाट्रिप्टान इज अ फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग. रिजाट्रिप्टान क्या होता है, फास्टेस्ट. देखो सुमाट्रिप्टान जो है वो है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, फ्रोवाट्रिप्टान जो है वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, ठीक है. रिजाट्रिप्टान जो है वो फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है. You have to remember all these are the triptan. So 5-HT1B1B receptor agonist, all these are the triptans. They are a drug of choice in the treatment of acute attack of migraine. तो sumatriptan is a drug of choice in the treatment of acute attack of migraine. यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है. sumatriptan is a drug of choice in the treatment of acute attack of migraine. So these are the drugs which are used in the treatment of migraine, right? We'll see it again, management of migraine or treatment of migraine, right? So during the acute attack, initially these migraine attacks are treated with the analgesic drugs or non-steroidal anti-inflammatory drugs. If you get relief, then it's okay. If not get, then you have to use triptans like sumatriptan and all that, or ergotamine and caffeine. Okay, and still if you're not getting the relief, you have to use opioidal drug like opioid, like codeine and all that, codeine droperidol. Okay, like that. If not controlled, then you have to use propofol. It is a anesthetic agent, right? Now for the prophylaxis, for the prevention, these drugs are used. So for the prevention of migraine, beta blockers, in that propranolol, timolol, nodelol. So out of that propranolol is a drug of choice for the prophylaxis of migraine. ठीक है, यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना है. प्रोप्रानोल क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए, प्रोफिलैक्सिस. प्रोफिलैक्सिस मतलब प्रिवेंशन. एंड सुमाट्रिप्टान क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अटैक. सुमाट्रिप्टान एक्यूट अटैक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है. प्रोप्रानोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस द प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन, राइट. Now calcium channel blockers, in that you have flunarizine, diltiazem, verapamil, nimlodipine. Okay, then if flunarizine also has a sodium channel blocking activity. ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग भी करता है, सोडियम को भी ब्लॉक करता है. देन ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट इन दैट यू हैव अमिट्रिप्टिलिन, इमिप्रामाइन, नॉरट्रिप्टिलिन. सो अमिट्रिप्टिलिन का ही एक्टिव मेटाबोलाइट होता है
नॉर्टिट्लिन. इमेप्रोमाइन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है डेसिप्रोमाइन. So you have to remember these things. Now anti-epileptic drugs like topiramate, valproate, gabapentin, they are also used in the treatment in the prophylaxis of migraine. Then methyl sargide, cyproheptadine, clonidine, then candesatran and botulinum toxin A. बोटोलियम टॉक्सिन ए जो होता है ये माइग्रेन हेडेक परसिस्ट फॉर मोर देन 15 डेज. 15 दिन में कंट्रोल नहीं हो रहा है. So finally this botulinum toxin A that is given. You can order this magic bullet for GPAT Niper DI Pharmacist exam. Read 2-3 times before the exam and qualify 100% with very good rank. It's our guarantee. You can contact me on this number. We have very much promising results from past 5-6 years, and as you can see, thousands of students are placed in the Niper. You can also join our GPAT Niper 2024-25 online crash course where you will have live lectures, recorded lectures. All lectures will be subject wise and chapter wise. Then the study material will be delivered to your doorstep via courier in the form of hard copy. Online test series will also be there. Now everything is an 8,000. Now this validity for this course is लाइफ टाइम. ऐसा होता है ना कि मैं सेकंड ईयर में हूँ, मैं थर्ड ईयर में हूँ, तो मुझे क्या. सो इसकी वैलिडिटी के लाइफ टाइम, जब तक आप देखना चाहोगे तब तक वीडियो को एक्सेस मिलेगा. ठीक है. थिंग इज ना 8,000 एंड इफ यू गेट ऑल इंडिया रैंक बिलो 20 और इफ यू गेट ऑल इंडिया रैंक लेस देन 20 इन द जीपैट एग्जाम, सो ऑल फीस विल बी रिफंडेड इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड. आपको ये पूरा पैसा वापस दिया जाएगा एज अ रिवॉर्ड अगर आपका रैंक अच्छा आता है. Hello students, order the magic bullet for GPAT Niper Drug Inspector, read twice and qualify 100